सुबह का। टोस्ट है विद बटर और 2 अंडे हैं और एक बड़ा मग है, मतलब बड़ा कप है कॉफ़ी का। और मैक्सिम भी उठ गए हैं और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। ये शायद लगभग एक्सपोर्ट होने वाली, मैं भी अपलोड कर दूंगा। और मेरे पास जो डेस्कटॉप है उस पर बॉटल बैंकरप्ट की वीडियो सीक्रेट सोवियत न्यूक्लियर बंकर, और बाहर बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, इनफैक्ट अभी भी गिर रही है। काफ़ी गौर से देखने पे मालूम पड़ता है कि स्नो गिर रही है। और वहाँ पर देखिए मशीन जो है वो हटा रही है बर्फ को। ये अपने यहाँ जैसे जेसीबी होती है उस तरीके की ये मशीन है। There should be the room where they showed. Think it's up here. Bloody hell. Too dark to go into. No, BackPacker, near my group. Never mind, guys. Imagine the life that took place here before the parties and people wedding parties and stuff, and all the people. Wow. Yeah. Oh man, you think? Smell it. It's the water. You can really smell it. This is tomato puree? Yeah. Oh. मैक्सिम ने टोमेटो प्यूरी का छौंका लगा दिया है इंडिया के हिसाब से। हम लोग तो इंडिया में क्या सब कुछ आमतौर से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा नहीं होता है ये सब। आज हो रहा है। आज मैक्सिम हम लोगों के लिए, मतलब अपने और हमारे लिए बीफ कटलेट बना रहे हैं। ये मिंस्ड मीट के ऐसे समझो कि गोला कबाब जैसे होते हैं उस तरीके के, लेकिन ये टोमेटो प्यूरी में मतलब डूबे हुए हैं। If something else happens, we will add some garam masala then. Of course. रामबाण इलाज है भाई गरम मसाला। जो कुछ भी, इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे एड्स भी बने हैं कि अगर कोई चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट कहाँ है, तो चाट मसाला, गरम मसाला, ये सब ऐड करके उससे टेस्ट लाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने देखा है ज़्यादा टेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। मैं एक्चुअली वर्ल्ड ट्रैवल अपनी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि पूरी दुनिया में, एक्चुअली बहुत सालों से पढ़ ही रहे हैं, मुझे देखना है असल में लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू पीपल लिव अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आज बीफ कटलेट बन रहे हैं। So my father catches this fish, but he already prepared it, like cleaned inside and outside, so I need only just to cook it. So fillet has been already done. No, but it still has bones in here. Not the actual fillet, but some of the like intestine has been out. Yeah. मैक्सिम बता रहे हैं कि उनके पापा ने एक्चुअली ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी हैं और हम लोग इनको भी बनाएंगे, लेकिन मैक्सिम मुझे कह रहे थे कि इसको हमारे बगैर मत खाना, अदरवाइज इसमें कांटे वाटे हैं। इनको लग रहा है कि हम लोग मतलब खाते भी नहीं है फिश। भैया हम लोग पुराने चावल हैं, इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये कंसर्न है तो इनकी बात को रखेंगे बाला और इनके साथ ही खाएंगे। और भाई थोड़ी देर नहीं होती है कि मैक्सिम की बियर खुल जाती है। ये बियर वाकई बहुत अच्छी है। ये पाइनएप्पल एंड ग्रेपफ्रूट। हाँ, ये बियर भाई पाइनएप्पल और ग्रेपफ्रूट की है। ये बहुत अच्छी है, मतलब ये कॉकटेल है, ट्रू बियर नहीं है, लेकिन इसका अल्कोहल कंटेंट 6.5% है। Yeah, 6.5. It's actually a lot for Russia. Of course, but not for the Indians. As in India, we love our beers at like 7% or maybe 9% too. ये बहुत अच्छी है। Ooh, it's very good. और ये भाई अपना आटे का, आटा है भाई, मैं आटे का बता रहा हूँ, मैदा। ये मैदा नहीं है, ये व्हीट फ्लावर है, आटा है। और ये भी शायद इसमें पेठा लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे।
Let's see. Actually, maybe it was. मैंने मैक्सिम से पूछा कि यूनिवर्स कैसे बना है, तो इनको ये थोड़ा सा तो आइडिया है कि बिग बैंग थ्योरी से बना है, लेकिन फिर मैंने पूछा बिग बैंग थ्योरी क्या है और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, तो देखो इनके जवाब क्या आते हैं. As I remember the spreading, they found out that the universe is kind of still spreading because of the how to say it in English. But do you know the name of the scientist who actually figured it out? I don't know, but I think it's maybe the family name. It's like the telescope in the space Hubble. Yes. It was him. Yes. Yeah. But would you like to know about him? Right now, I know about him. I know some stuff about him, not so much, but for me it's hard to Comprehend. To speak about this in English because it's a scientific language begins, and that's the place where I am not able to speak like normal. But do you want to know about it right now on this Yeah, camera? you can help. Yeah. Okay. So the name of the scientist is Edwin Hubble. Edwin Hubble. And he was a lawyer by profession. He just after he got tired with his by practicing the law, he just what he did, he just sold everything and bought a big telescope, and he used to stay the whole night, like for many months, and he figured out one thing. It's called the redshift. Redshift, yeah. We call it infrared shift. Yes, of course, it was infrared shift. That kind of, if object is moving away from you, the color changes to red. And yes, and why does it happen? Do you know the reason behind it? We call it actually in scientific theory. It's called the Doppler effect. Yeah, Doppler effect. We even have the music band with that name. Ah. Here So, in Russia. Doppler effect actually talks about in terms of about the waves. Yes. It works These are with the electromagnetic sound. waves, It works even and with whenever the sound. space-time gets expanded, it actually expands physically. It expands the electromagnetic waves. Yeah. What actually happens in doing so? The white light actually gets expanded, like its wavelength gets expanded. Its frequency gets reduced. That's why a white light which was emitted by a star or a collapsing star turns red. Slightly red, not actually red, but slightly red. This shows that our space-time, like the distance between the two stars or like planets between them, like the distance between the two galaxies. Edwin Hubble figured out that the distance between the two galaxies was expanding. And one of the theory which came afterwards, like the expansion, the rate of the expansion is being is actually going up. Yeah, I heard that. Which is problematic because if it goes up and up, at one point in time, it's gonna rip the whole universe apart. Yeah, it's kind of. Gravity has to take control of it because it's going beyond the powers of the gravity, I must say. So actually a lot of how could you think that a person who was practicing the law could figure this out? I mean, it's strange. I think it's normal because maybe he was. It's all about being enthusiastic about something. Enthusiastic and dreamer. Yes, of course, think he was a dreamer. He used to put his cigar and like stay awake for the whole night watching the stars. And he figured, I mean, there were many scientists around the world, like in Harvard, like in Oxford, in big universities. They weren't able to figure this out. And this person who was, who used to practice the law, figured this out. And Stephen Hawking has proved that there is no God. Do you know about it? I know about Stephen Hawking, but I don't know about the experiment. Actually, so what did Stephen Hawking prove? Stephen Hawking actually proved that there was no time before the Big Bang. So since there was no time before the Big Bang, how could God exist before the universe? So there was this thing. As for me, It's a logical statement, mathematically proven too. As for me, I think that universe, as for me, is some kind of God. It's not a God. It's I don't know how to explain it. I believe in the universe. Like in the natural forces.
Yeah. Do you know how many forces, natural forces are there in the universe? Oh, I don't remember. यहाँ पर साइंस की क्लास चल रही है और मैक्सिम की जो है हालत टाइट हो रही है. आई एम एक्चुअली टेलिंग माई व्यूअर्स दैट मैक्सिम इज अटेंडिंग राइट नाउ. मैक्सिम इज अटेंडिंग ए साइंस क्लास. That's good for free. Of course. तो अभी यहाँ पर शायद बीफ कटलेट जो है बनके तैयार भी हो गए हैं और अब मैक्सिम बनाने जा रहे हैं वो छोटी छोटी मछलियाँ. देखते हैं. और यहाँ पे रखा हुआ है अपना आटा. यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कैसे रशियंस जो है अपने कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ धूप नहीं निकलती और बाहर अभी भी बर्फ गिर रही है. शायद इतने छोटे छोटे स्नो के फ्लेक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो एक्चुअली बारिश के फॉर्म में गिरते हैं. वो शायद कैमरे में ना दिख रहे हो, लेकिन मेरी आंखों को बहुत कायदे से विजिबल है और बहुत झमक के भाई बारिश हो रही है. मतलब बारिश हो रही है, वो आते आते स्नो हो जाती है. और अभी भी मैक्सिम की वो बियर जो है चल रही है. Yeah. Out. मुझे लगता है मैक्स की कोई दोस्त आई हुई है. What is it? It's a fight. Oh, it's fine. Привет. Привет. Okay, just call me. Боже мой, почему здесь камера? На ютубе будешь? Нет? Будешь. Все там будем, рано или поздно. This is Karina. Okay, my name is Zishan. I'm from India. It's nice to meet you. I've come here to see your country. Is it good? Do It's, you like it's it? fantastic. Oh, really? Why? Because it's snowing out here, Uh-huh. and this is the first time actually I have witnessed this in my life. Oh. I've come from a tropical country. Uh-huh. It's always summers. Even the winters are, for you guys, my winters are the summers, are like summers, because the temperature won't go beyond like 15 degrees Celsius. Oh, that's good. That's good. And what's the hottest in summer in your region? Like 45 degrees Celsius. 45. Thank God we have air conditioning system. Otherwise, but for us, it's normal. Yeah. That's why we have the Good mangoes. time there. That's why we have the mangoes. Because mangoes get sweet and tasty in that kind of temperature. Mangoes? Mangoes. I'm very bad at geography, and I actually Maxim is My main way subject is better. geography. And what is the purpose of your visiting to Moscow? Okay, so I'm on my world tour. I have to visit every country on the planet, that's good. and I chose Russia as my first country because Russia was the only country which was open for Indians due to the coronavirus. Of course. So we couldn't go to Europe. We tried to contact the Polish embassy. They said at that moment we are not accepting any tourist application. So I just came here. Everybody is afraid of this virus. Yes, coronavirus. Yeah. Did you take the shot? Yes, of course. Oh, which one? Sputnik V? Do you? Yes, I'm vlogging. I'm not prepared for this actually. Okay. Yes, I did because. मैक्सिम की एक्चुअली दोस्त मुझे वोडका के बारे में समझा रही हैं कि मैंने इनको ऐसे समझाया कि इंडिया की 4 बियर इक्वल्स टू 1 रशियन वोडका, लेकिन यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स चल रही है. Окей. Так, значит, а у нас есть, допустим, сколько там? 0,5. 500. Ну, допустим, 500 миллилитров, да? Умножаем на 7%. То есть это будет 7% от 500. 10 это 50. Ну, 7 это там. मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये सब रशियन लैंग्वेज में है. Плюс-минус. Да, 40.
Что-то, Максим, у нас ни хрена с тобой не получается. Чё, все правильно, все получается. Да? Each other and you are sitting in the same cabin for. Well, 7 days. actually, we have traveled to St. Petersburg when we were like 2007. Вот. Yeah, like 20. I was 22, she was 20. No, if he was 22, I was 19. Okay. There is 3 years 3 years of gap. between us. Yeah, and we went to a concert, Korn. Do you know this band? Korn? Limp Bizkit, Korn. No. Linkin Park, the only one. Linkin Park. Linkin Park, yeah. So It's some sort of. It's some sort of like metal rock. It's more harder than Linkin Park. Slower and harder than. I'm actually not a big fan of hard music. Yes. I like the old stuff. Old stuff. Old stuff, yeah. I like the old stuff. Very soft, which has the lyrics which has some meaning. It is very important for our generation to listen to the hard music. Yes, to listen to lyrics, because I know that Because nowadays people don't no, they give don't, anything. and it is very disappointing actually. Of course. Yes, because the lyrics songs must have some meaning. Yes. And Yes. it also must have some music, at least. Music too. Not Yeah. like the modern rap. I don't listen to modern music. So we were traveling to St. Petersburg on да. Такой. Ага. А черного нет? Ну его прям заваривать надо, можно заварить. Дай понюхать. I'm very picky about everything. Like, So- is he preparing tea? Yes, he's preparing tea for me, and I want to smell black one. Okay. Yes, because. Has this tea You been want? imported from India? Exported from India? I don't think so. Let me see. Okay. Blended and packed in the England from imported teas. From imported teas. Now this is the word. They must have imported from India, because Britain actually built the tea gardens in India, in Assam. Tea gardens. Yeah, in the east of the India. Uh-huh. There are many tea gardens. Like, world's biggest. You didn't know that. Oh, well, maybe. No, I heard that India is the biggest producer of tea, right? And when we traveled to St. Petersburg to the concert, we didn't know that it was just 10 of us, 10 of the closest. 10 of your friends. Yeah, friends. And we traveled for 8-9 hours. It was just the night, and we made friends with lots of people, because there were actually very lots of people who traveled to the same concert, and we didn't know about that, so we made lots of friends just in 8 hours of our journey. So I think it was 2009, yeah, and it was a crazy trip because we were smoking weed in the train. You were smoking weed? Yeah, we were walking just like. Actually, he has mentioned in his profile, Couchsurfing profile, that he's a bad boy. I actually told him too. I'm a bad boy, but I'm a good man. Yeah. Because of my bad habits. बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर he has हम तीनों के बीच. Where is my tea? Bad boy. It's being prepared. It's being prepared. Thank you. Thank you very much. He took a borscht, and we took a vodka, and I said to him like, first you drink vodka, and then you pick a spoon of borscht. And he said it was like a Borscht, which is made with the beetroot. Yeah. And the sour cream. Yeah. And he said that it was an explosion of taste in his mouth. The Mexican guy, they have a lot of spices also, and even this stuff surprised him. So you should try it. ये दोनों मुझे मिलके वोडका पिलाने के फिराक में हैं. Of course, I'll try. Yes, you should. Because I'm on a hunt to have this experience. Yep.
मैंने एक्चुअली जब बताया कि मैं उज्बेकिस्तान इसके बाद जाने वाला हूँ, तो करीना जो है वो थोड़ी सी कंसर्न थी, क्योंकि उज्बेकिस्तान क्यों, मतलब रशियंस के लिए उज्बेकिस्तान शायद उतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे दुनिया के सारे देशों को एक ना एक करके विजिट करना ही करना है आफ्टर ऑल। And did it actually hurt while it's Do you have any tattoos? No, of course, why? no. I just think it's because for it's, because this place is really hurt. I may not get the job. It's very strict regarding that. Have you got any tattoo? Yeah. Oh, haven't you seen one? Oh, it's in Hindi language. It's in Hindi language. Can you translate? No, it's in, I think, Sanskrit language. Let me see. No. Could you please? Okay, no. This way. The sun. और मैक्सिम भाई की अनदर काल्स पे खुल गई है। खुशबू बता दें बहुत अच्छी आ रही है, मतलब भुनी हुई जैसे मछलियों की खुशबू होती है तो वैसी आ रही है। इसमें खास मसाले वसाले नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे लग रहा है मज़ा आ जाएगा। और बाहर देखो भाई, बर्फबारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। शायद कैमरे पे दिख जाए कि कुछ ना कुछ गिर रहा है ऊपर से। अरे यहाँ के इस अपार्टमेंट से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, मतलब कहर है भाई साहब, व्यूज़ कहर। मुझे इस खुशबू का एहसास हुआ। हाँ क्या यार, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता है, बियर भी बहुत पीता है। देखो भाई ये कितना लायक बच्चा है, मतलब सब कुछ साफ करके ही, मतलब खाना पहले बनाया फिर सब साफ कर रहा है। इतना मैंने अगर कभी कर लिया होता तो मैं कहीं और भी होता, अभी तो वैसे मैं यहीं हूँ। मैं जो हूँ अभी बीफ कटलेट अपना एंजॉय कर रहा था, उसको हीट करने के बाद। ये काफ़ी अच्छा है, मैक्सिम अच्छा खाना बना लेता है यार। ये है बीफ कटलेट। मैं गाना बंद कर देता हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। बीफ कटलेट इज गुड। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से रशियन फूड ट्राई कर रहा हूँ, मज़ा आ गया। मैंने कच्ची मछली ट्राई की, ऑफ कोर्स इट वाज क्यूरेटेड विद सॉल्ट बट इट वाज रॉ। मैंने रशियन ड्रिंक्स ट्राई की, रशियन पब में भी गया, डांस भी किया, जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। एक्चुअली लाइफ में मैंने कभी डांस वांस नहीं किया। अब सोच रहा हूं मतलब क्यों नहीं किया। मैक्सिम भी होता, लेकिन वो बेसिकली अपने काम पे चले गए हैं। नाइट शिफ्ट कर रहा है एक्चुअली वो। अब वो सुबह आएगा लगभग 11-12 बजे। बहुत सही बंदा है यार, बहुत लायक बंदा है। और हाँ बताना भूल गया मैं, मैक्सिम ने एक्चुअली फिश भी फ्राई की हैं, वो भी रखी है। उसने कहा था एक्चुअली कि ये फिश जो है हम लोग ठंडी करके खाते हैं, लगभग कुछ घंटे जो है उसको फ्रिज में रखने के बाद। किसी तरीके का शायद कोई सॉस यूज़ करे, पता नहीं, वो सुबह देखते हैं। जब तक खाना चल रहा था मेरा और वीडियो एडिटिंग भी चल रही, और इधर एनरिक इग्लेशियस के गाने में सुन रहा हूँ। मेरी वर्क ट्रिप अच्छी चल रही है,
तो जितने लोग भी, वैसे बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है और मेरा कोई व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वर्ल्ड ट्रिप पे हर एक देश में निकलूंगा। एक्चुअली मेरी आदत नहीं कैमरे पे बोलने की, तो समटाइम मेरी हिंदी भी गड़बड़ा जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली मिंस्ड मीट का बना हुआ है टोमेटो प्यूरी के साथ। बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं पड़े जैसे हम लोग इंडिया में बनाते हैं, हर चीज़ में लगभग सारी स्पाइसेस डाल देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग चीज़ों के रॉ टेस्ट प्रेफर करते हैं। चलो भाई, अपना तो हो गया।